Now we are discussing how can we write a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन देखिए, फॉर एग्जांपल हमने भी बात की कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखना है तो वी सिंपली राइट मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स बाय एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वी कैन सिंपली राइट देयर सिंबल्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें तो मैग्नीशियम प्लस O2 विल गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड. So this is a certain, it is a good example how to write a chemical reaction. There is a left hand side, there is a right hand side. Left hand side is called reactant and the right hand side is called product. Now the balancing of a chemical equation, so it is very important. I will give you a video while I am teaching you how to balance a chemical equation. We will do it after some time with another video, but let's start with the टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. सो अगर हम यहाँ पर सीधा आएँ, यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें, सो वी विल स्टार्ट विद द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस. क्लियर? सो दैट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइंड टू गिव यू अ सिंगल सब्सटेंस, दैट इज़ योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है एक्टिविटी. अगेन वन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. लिसन क्लास, यू हैव टू टेक एक्टिविटी वेरी सीरियसली. क्वेश्चन विल कम, क्वेश्चन always comes from the activity part as well. So take a small amount of calcium oxide or a quicklime in a beaker. So in a beaker. So what happens, you will observe the temperature is increasing. Again, what happens when as soon as you are dissolving or you start dissolving calcium oxide in water, what happens, the beaker start getting warm. So heat is releasing during the course of reaction. So it is also called as exothermic reaction. Clear? So it is a combination reaction as well as an exothermic reaction. तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के जो इक्वेशंस होती है उससे वो क्वेश्चन बना के आपको कंफ्यूज कर सकता है. वो एक ऑप्शन में आपको बोलेगा कि दिस इज़ अ पर्टिकुलर रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट. ऑप्शन में वो देगा इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज़ कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नन ऑफ दिस. तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो दैट इज शुड बी कॉम्बिनेशन एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है और केमिकल रिएक्शन वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी, एक्सोथर्मिक भी है, कॉम्बिनेशन भी है. क्लियर? सो यहाँ पर कुछ नाम आपको याद रखने, दैट इज़ CaO. CaO is called as quicklime. Clear? So this CaO is called as quicklime. That CaO is called as quicklime, and the quicklime on reacting with water gives you calcium oxide slaked lime. The next reaction, it is do you know, this is very important, you should always take a very good note of these. A solution of slaked lime produces is used for whitewashing. So what happens, slaked lime, formula of slaked lime is CaOH का whole twice, है ना. Solution, so for solution, in case of solution we will write, if we are making it in water you have to write aqueous, है ना. Clear? So a solution of slaked lime is used for white washing. हम उसको white wash करते हैं, white washing में यूज़ करते हैं. The chemical calcium hydroxide reacts slowly with carbon dioxide in air. So because you know that in our atmosphere carbon dioxide is there, so what happens, that calcium hydroxide react with the carbon dioxide present in air and formed अ वाइट कलर कंपाउंड दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट. तो अगर आपने घर में अपने सफ़ेदी करते हुए देखा होगा किसी को, तो जब सफ़ेदी करने वाले आते हैं तो वो इनिशियली जो सफ़ेदी होती है वो काफ़ी क्या होती है, ट्रांसलूसेंट टाइप होती है. एंड सडनली आफ्टर सम टाइम व्हेन इट स्टार्ट्स ड्राइंग, व्हाट विल हैपन, इट कन्वर्ट इनटू वेरी शाइनी काइंड ऑफ वाइट कलर सब्सटेंस, है ना. सो शुरू में ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो एक तरह से पानी सा फेर रहे हैं, बट आफ्टर सम टाइम व्हाट यू ऑब्जर्व दैट अ वाइट कलर लेयर्ड फॉर्म्ड. That white colored layered is of calcium carbonate. Clear? So it is interesting to note that the chemical reactions formula for marble is also calcium carbonate. Clear? So यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, CaCO3 को हम द फार्मूला ऑफ मार्बल इज CaCO3, फार्मूला ऑफ लाइमस्टोन इज CaCO3, फार्मूला ऑफ एग शेल यानी कि जो अंडे का जो ऊपर का वाइट शेल होता है, दैट इज़ द फार्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर शेल इज़ ऑल्सो CaCO3. प्लीज़ इसको नोट करें. कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं और मार्बल को भी हम कैल्शियम कार्बोनेट ही बोलेंगे.
एग शेल को भी हम कैल्शियम कार्बोनेट ही बोलेंगे. क्लियर. सो अगेन नाउ लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. बर्निंग ऑफ कोल. बर्निंग ऑफ कोल, जैसे अगर हम कोल है, हमारे पास कोई भी हमारे पास कोयला है, उसको हम बर्न करते हैं, दैट व्हाट विल हैपन, कार्बन डाइऑक्साइड विल इमिट. क्लियर. सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ combination reaction. Formation of water from hydrogen plus O2. यानी for example if we take hydrogen gas and oxygen gas and we are starting electrolyzing it, so what will happen, so we are combining it, what happens, water forms. ठीक है. So these are all examples of combination reactions. So what you have to remember when we are talking about combination reaction, two or more reactants combine to form a single product. Clear. So this is the definition of combination reaction. नाउ एक्टिविटी 1.4 पे इन्होंने यहाँ पे कुछ कहना चाह रहे हैं. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इन्वॉल्व. ठीक है. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द रिएक्शन मिक्सचर इज गेटिंग वार्म. द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. यानी द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. क्लियर. सो इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के. CH4 यानी मीथेन, ये इट इज़ अ मीथेन गैस. मीथेन गैस ऑन कंबशन गिव्स CO2 प्लस H2O. क्लियर. मीथेन गैस ऑन कंबशन गिव्स CO2 प्लस H2O. वी विल लर्न बैलेंसिंग after some time. Just focus on the focus on the definitions, focus on the types of reactions. Clear. Now we will all know that we need energy to stay alive. यानी कि हमें क्या है, अगर हमें सर्वाइव करना है इन दिस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, सो व्हाट वी डू, वी नीड एनर्जी टू डू आवर वर्क. सो वी गेट दिस एनर्जी फूड वी ईट. यानी कि हम जो खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, और ये जो खाना हम खा रहे हैं इसको डाइजेस्ट करा जाता है हमारी बॉडी के द्वारा, एंड फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज, ब्रेड्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स. सो बेसिकली हमने यहाँ पे पूरे फूड को एक सिंपल यूनिट में समझाने के लिए हमने क्या बोला, these are the carbohydrates that are broken down into glucose. ठीक है. and that glucose combined with oxygen in the cell of our body provides energy. clear है. सो ग्लूकोज का जब हम कंबशन करते हैं, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का कंबशन होता है, बिकॉज वी आर taking oxygen in, so what happens, the respiration process occurs. ठीक है. so that process is called respiration, and during this process of respiration we will get energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. so that energy help us to do our work. clear. the decomposition of vegetable matter into composite is also an example of exothermic reaction. and decomposition जो होता है vegetables का microorganism के द्वारा, that is also an exothermic reaction. Listen, this is very important. Why respiration is an exothermic process? Because during the course of digestion, food is broken down into simpler substances, and these substances can be represented as carbohydrates, which broken down into glucose, and the glucose when combines with the oxygen present in our blood provides energy. Clear. वो convert हो जाता है किसके अंदर, CO2 plus H2O plus energy, and that energy is in the form of ATP. क्लियर है. चलिए, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डीकम्पोजिशन रिएक्शन. द डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, द रिएक्शन इन विच, क्लियर है. देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इन विच a single substance decomposes or break down into simpler units. Clear. that a single substance or single reactant breaks down into simpler product, that is your decomposition reaction. For example, we have taken ferrous sulfate. I have discussed in the class what when we will call it ferrous sulfate or ferric sulfate. When the iron has a valency of 2, that is called as then it is called as ferrous sulfate. When an iron has a valency of 3, then it is called as ferric sulfate. Clear. so it is ferrous sulfate. When we heat it, what happens, it convert into three simpler units. One is Fe2O3, another one is SO2 plus SO3. Clear. so we will discuss it.